Hi everyone, and thank you so much for watching my channel The Witty Turtle. My name is Anvesha and right now I am a CMA finalist. So as you have already seen in the thumbnail of this video, I'm going to be sharing my experience of taking paper 20C as the elective in group 4, right? So after completing my exams, when I installed Instagram, I got so many messages from students asking whether they should take SPMBV or they should take entrepreneurship and startup, right? So in this video, I'll be giving you an overview of both the papers, like basic क्या differences हैं and why I chose entrepreneurship and मैंने जो exam दिया उसका क्या experience रहा, right? So I would recommend you to watch the video till the end because recently ICMAI has given a notification where it has mentioned that by paying 1000 rupees you can change your elective, right? And I'll be telling you why paper 20C is one of the most scoring papers in your group 4, right? So without any further delay, let's start with the video. Okay, so in this video, I'll be telling you how did I prepare for this particular paper, how many hours did it take me, what all resources I had followed, and what was my technique to memorize everything. So first, let's start with the difference between SPMBV and entrepreneurship. If you are good at SFM, if you are good at financial management, if you are good at numericals, then you should definitely go for SPMBV, right? But if you are good at theory, if you are interested in entrepreneurship, if you want to start your own business someday in future, then entrepreneurship and startup paper is the best. And also ये बहुत ही scoring paper है because by studying this much you can score 60 easily, right? कम पढ़ के भी 10 दिन के प्रिपरेशन में भी you can score 50 easily, right? ऐसा कोई भी पेपर नहीं है हमारे CMA में जो कि आप 5 से 10 दिन पढ़ के भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो. बट दिस इज वन ऑफ दोज पेपर्स वेयर यू जस्ट हैव टू गिव लिटिल एफर्ट्स एंड द रिजल्ट इज गोइंग टू बी द बेस्ट आउट ऑफ ऑल द पेपर्स, राइट? एंड ये तो रीज़न है कि आप कैसे चूज करोगे, राइट? एंड व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल एग्जाम्स लाइक CMA फाइनल, सो टाइम प्लेज अ वेरी बिग रोल, राइट? सो हाउ डिड आई प्लान दिस पेपर? सो पहले तो मैंने एक एक रीडिंग किया था सारे चैप्टर्स का. आई हैड लेफ्ट यूनिट 5, बाकी सब कुछ मैंने पढ़ा था. देन आई हैड ऑल्सो परचेज द क्लासेस ऑफ CA दिव्यांशु बंसल सर. सो व्हेन आई टुक हिज क्लासेस इट वाज एन एग्जाम ओरिएंटेड बैच which was approximately of 35 hours, and the price was 2500, but because we were a group of students, so he gave us some discounts. And if you also want to purchase his classes, either regular batch or his fast track batch, which is the exam oriented batch, then yes, do not forget to use my coupon code, which is ANW200, to get a discount of 200 rupees on every purchase, right? And coming to his regular batch, which is available in both Hindi and English. So the Hindi classes are, I think, 60 hours and the English classes are 50 hours, right? And the regular batch is priced at 3999, which is approximately 4000 only. And also use my coupon code to get a discount of 200 rupees, right? Which is ANW200. Okay, so that was it about his classes. Okay, so this is a review of his book. I'm just showing you so that you'll get to know कि अंदर क्या क्या है. So this is the cover page. Then we have the index, right? As you can see, मैंने यहाँ पे mention कर रखा है कि मेरे को इस book से क्या पढ़ना है, अपने notes से क्या पढ़ना है. Then again, the very same thing for every module, right? There are a total of 8 modules, and for every module I had done this particular segregation. Now let me tell you the best part of this particular book, which is everything is mentioned in a question answer format, right? If you take out the ICMI module, then उसमें सब कुछ paragraphs में है, which gets very difficult to understand, memorize, and retain in your mind. But here you know that yes, I have to remember 3 points in the definition of product positioning. Then I have to remember these 6 points in importance of product positioning. Then again there are 9 points of benefits of product positioning. So like this you can do it, right? And one more tip that you can do this, कि यहाँ पे आप you can create acronyms. Like यहाँ पे there are 5 key strategies of product positioning. So मैंने इसके सारे first letter को लेके एक यहाँ पे acronym बना दिया. So this gets very easy for you to remember in the exam. And in my term I got this exact question in the exam, and luckily मैं ये लिख के आ पाई.
Then similarly यहाँ पे भी 10 points हैं, what are the steps of product positioning. You can make this kind of acronyms, and this entire book is like this. सब कुछ यहाँ पे एंड में जगह भी है, if you want to make your own notes or anything to go through one day before your exam, so you can write it over here. Similarly for startup models, how many kinds of models are there, इसके भी acronyms हैं यहाँ पे. आपको जो जो पढ़ना है आप ऐसे कर सकते हो. So this is ICMAI book से पढ़ना है अगर आपको, तो that consumes a lot of time, whereas this particular book is going to save a lot of time, right? So yes, this is definitely a good purchase for you. And agar if you are not good at theory, then you should definitely go for his classes. Apart from that, what I did, I had prepared a chart जो मैंने अपने स्टडी रूम के दीवार पे स्टिक कर दिया था. सो सुबह शाम मैं जब भी बोर होती थी मैं जाके वो चार्ट देखती थी, एंड आई यूज टू रिमेंबर एवरी की वर्ड्स. ठीक है, हर की वर्ड मैं याद रखती थी. एंड एवरी संडे आई यूज टू टेक 1 यूनिट, एंड वो बुक से मैं लाइन बाय लाइन पढ़ती थी, क्योंकि जो पॉइंट्स होते हैं वो तो दिव्यांशु सर के बुक से और मेरे चार्ट से वो कंप्लीट हो जाता था, वो मेरे को थोड़ा थोड़ा मेमोराइज होने लगा था. बट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट आई यूज टू रीड द बुक ऑन एवरी संडे. सो इतना ही मैंने एफर्ट दिया था इस पर्टिकुलर पेपर के लिए. एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल ऑल्सो मेक यू गो थ्रू द कॉन्सेप्ट बुक ऑफ सी ए दिव्यांशु बंसल सर. तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाउ दिस बुक हेल्प्ड मी, राइट. एंड वन मोर थिंग इज दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन लोगों ने SPMBV लिया था, इस बार जो क्वेश्चन था, एंड इवन इन द लास्ट अटेम्प्ट ऑल्सो, SPMBV में क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, राइट. बट entrepreneurship, I am telling you, I attempted 100 marks and I completed the paper 20 minutes before the duration. मतलब मैंने 2 घंटा 40 मिनट में पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया था, which is unbelievable in professional exams like CA, CMA, CS, right? So that's why अगर आप confused हो कि कौन सा पेपर लेना है एंड कौन से पेपर के लिए कम मेहनत करनी पड़ेगी, so definitely entrepreneurship and startup is one of the best papers, right? And if you write to me in the comment section, then I'll also provide you with an ABC analysis of this particular paper कि कैसे आप कम पढ़ के, जितना सिलेबस है उससे भी कम पढ़ के आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो. So I hope by now you must have got a proper idea of this particular paper. And yes, one more very important tip to score good in this paper. Okay, so मेरे results नहीं आए हैं, but I'm giving you so much of ज्ञान, but that's okay I think. सबसे इम्पॉर्टेंट है MCQ. जितना भी MCQ है आपका अवेलेबल ऑन योर ICMAI मॉड्यूल, वो सारा MCQ करना है. एंड अलॉन्ग विद दैट ICMAI इज रिलीजिंग MCQ बैंक्स, राइट. यू हैव टू कंप्लीट एवरी MCQ फ्रॉम दैट ICMAI MCQ बैंक विच इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ. और उसके अलावा ना आई सजेस्ट यू कि 10 मार्क्स का एक केस स्टडी आता है इन द MCQ सेक्शन इटसेल्फ, विच इज वेरी इजी. देखने से आपको डर लगेगा कि अरे ये क्या है इतना डिफिकल्ट, बट नो, यू जस्ट हैव टू काम योर माइंड एंड यू हैव टू रीड एवरी स्टेटमेंट. एंड MCQ में यू विल बी हैविंग 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच. सो वो पैराग्राफ पढ़ना है, वो केस आपको पढ़ना है, एंड देन यू हैव टू टिक द करेक्ट आंसर. यू हैव टू darken the correct answer in the OMR sheet, right? That's how you're going to score good in your MCQ section, which is of 30 marks, right? 30 से you have to target at least 24 to 26 in this particular paper. और बाकी जो है उसका भी मैं आपको एक ABC analysis लेकर आऊँगी in a separate video of course. And I hope this video has cleared your doubt whether you should take this particular paper or not. And subscribe करने नहीं बोलूँगी, I'll rather say कि pray करो मेरा group 4 clear हो जाए. And yes, if you want to purchase the classes of C. Divyanshu Bansal sir on entrepreneurship and startup, exam oriented batch हो या फिर regular batch हो, then yes, don't forget to use my coupon code ANW200, right? And yeah, that was it about this video. If you find this video helpful, then do share with all your confused friends who are appearing group 4 in June 25 or December 25 attempt, right? And as I already told you, subscribe नहीं करने बोलूँगी, rather you just need to pray for me कि यार group 4 clear हो जाए. So thank you in advance and happy new year to everyone.